कीमो की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम सिर्फ सर्जरी कर देते, you know. मैंने अपना वो जो ईयरली चेकअप था वो 6 मंथ्स लेट किया बिकॉज कोविड चल रहा था, लॉकडाउन था, हर साल कुछ निकला नहीं था, तो बहुत रिलैक्स थी कि ठीक है 6 महीने बाद करा लेंगे। बट डॉक्टर ने कहा नहीं, तुम शायद 4-5 महीने पहले आती तो सर्जरी हो जाती, बस तुम्हें कीमो और ये जो बाकी हार्मोनल थेरेपी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। सो वो टाइम एम्फसाइज करना आई थिंक इज इम्पोर्टेंट। Hi, this is Sohail over here from Instant Bollywood. Hi, Mahima, how are you? So good to Good. see you. You're looking Thank you. very beautiful. Thank you. अच्छा, as you said, like, पहले तो वो जो डॉक्टर ने कहा था कि जो सर्वाइवर जो वर्ड है, लाइक शी कॉल्स इट थ्राइवर, Yeah. तो आई टू एग्री ऑन दैट थिंग बिकॉज कोई भी बीमारी हो, चाहे एक कोई टाइफाइड हो या अगर किसी को एक्सीडेंट हो गया और वो सर्वाइव करता तो हम उनको एक्सीडेंट सर्वाइवर नहीं कहेंगे। आई जस्ट फील इट लाइक दैट। या मे बी किसी को बुखार हुआ, टाइफाइड से अगर वो बच गया तो टाइफाइड सर्वाइवर नहीं कहते। वाई लाइक कैंसर से अगर हम सर्वाइव करते तो कैंसर सर्वाइवर बोलते हैं। मे बी द रिस्क माइट बी देयर, ज़्यादा होता है उसके बचने के, बट एज यू सेड कि यू वर अ बिट लेट, दैट इज वाई यू हैड टू गो फॉर अ कीमो एक्चुअली। तो उसी तरह से मतलब अर्ली स्टेज में डिटेक्ट किया जाए तो उसके लिए आई जस्ट हैड अ सजेशन, लाइक वी हैव लॉट्स ऑफ क्लिनिक वे द MBBS डॉक्टर्स आते व्हेन वी गो फॉर अ नॉर्मल फीवर और एनीथिंग, वहाँ पर एक समथिंग लाइक रहता है, बट इट शुड बी ऑन अ लिटिल बिट मोर फोर्स कि कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए देयर शुड बी सम टेस्ट गोइंग ऑन ऑल दिस थिंग। माय क्वेश्चन कम्स टू यू कि महिमा, एज यू सेड कि यू हैव सर्वाइव्ड थ्रू दिस थिंग, यू आर अ फाइटर, but still, as you said, like their monthly checkup has to be there, but you are not doing that thing, and you're agreeing to that thing. That's a big thing. So, what is that mental setback, which you have to already gone through? तो ऐसे लोग जिनको नहीं कुछ हुआ है तो वो लोग तो उस चीज को फिर बहुत एक सेकेंडरी वे में लेंगे। तो what is that one message you'd like to give in a very strong way? ये कि हम औरतों को खुद को टाइम देना, इम्पोर्टेंस देना एक महत्व बात नहीं है, स्पेशली हमारे देश में। वी डोंट गिव आवरसेल्व्स इम्पोर्टेंस, एंड मेरा तो कॉन्फिडेंस नहीं है लंप को समझने का, तो इसलिए मैं करती हूँ, बट मुझे समझ नहीं आया अभी तक। तो ये जो हमारी हग ऑफ लाइफ की बॉटल है, दैट इज़ अ गुड ट्यूटोरियल किस तरह के लम्प्स होते हैं। मैंने जैसे कहा मुझे हर लम्प लम्प लगता है, सो लम्प्स होंगे, बट कौन से लम्प्स कैंसेरियस होते हैं, कौन से नहीं, which is part of your body. If you do it every month, then you'll understand. So yeah, so that training is very important. And आप जो बोल रहे हो हर क्लिनिक में, हमारे इंडिया में औरतें नहीं जाएंगी एग्जामिनेशन करवाने, वो 1 घंटा भी ऑफ नहीं लेंगी जाने के लिए हर महीने। तो उनको खुद सिखा दें तो ये बहुत बड़ी बात है, खुद सीख लें वो। और हमारी औरतें बहुत तेज हैं, उन्होंने बहुत कुछ सीखा हुआ है। they just need to be pushed and told and made aware. And you said like cancer survivor, you supposed to say something. What was that? Like we should not call cancer survivor. I asked something. शायद आप कुछ You should call them thrivers. I think हाँ, अभी फाइटर्स Yeah? वो जो टर्म है, हाँ, उनको thrivers ही बोलेंगे आज से, मेरे को thriver ही बोलना। ओके, थैंक यू। एंड एक बात और, ऐसा नहीं है कि आदमियों को ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता। There is a small chance that even men can get breast cancer. So if it's there in your family history, you're more likely to be at a risk. So, when you're doing your yearly checkups, I think men should also get themselves checked. Thank you so much. I think we can take Good one last afternoon. question. Yeah. Good afternoon, ma'am. Savita Bajaj here. I'm with Savvy World. So I have been a international fixer producer to so many of the top-notch international media houses in Mumbai. I have so many stories that I've encountered. I've also been, Mr. Ravindra, thank you so much for getting so many inspiring stories together. In spite of it all, I've been a caregiver also to my sister who went through an end of life care. I think these stories, these have to be told regularly because I mean, in spite of it all, in spite of knowing and experiencing so many things,
I've still not learned my lesson. I still need a constant reminder. I think we desperately need support. You know, these kind of platforms. If SBI Life has done a commendable job, but we need more of these platforms, these kind of support, care to come through, which will help everybody. I mean, at every stage, whether you're a corporate, whether you're a youngster, whether you're in your 40s, you're going through menopause, or you're a caregiver. Even a caregiver has a lot of support that they need. How to take care of patients, what are the do's, don'ts. There are myths, like we just heard of certain questions being thrown to you. There's so many myths and facts which have to be corrected and put in order. Thank you so much. You're right, absolutely right. But now we have so many corporates where women, there are a large number of women. So I think if one day in the month, the corporates reassert and remind people, not just women, just everybody about their health. Have they got their insurance in place? All of that. Have they done their checkups? It would go a long way. Just to support your thought, as I mentioned earlier also, we gonna call out to other organizations. Okay, we gonna talk to them. Okay, that please participate into this cause. Join the cause. Even in the website, when you order it, there is an option given. Where from a corporate you are reaching out for joining this cause. So that is one kind of one thing which we are trying to expand, use and expand. And as I mentioned, we are planning to do a lot of workshops in rural India. I'll just share one experience. In 2019, there is this village in Haryana which has a very high percentage of breast cancer. It is actually concentrated. Within a certain kilometer, that area, lot of women were getting breast cancer. We started the workshop there. We had to stop it because suddenly, after a period of time, from multiple villages, not only women, even men came in. That क्योंकि मेरे घर पे women नहीं है तो मैं जाके देख लेता हूँ ये क्या है. So it was very interesting to know that once they realized they wanted to be a part of this program and see that how they can benefit the women within the household. So that is the change we are seeing in the real Bharat, if I have to put it across, that वो taboo है, but धीरे धीरे कम हो रहा है. We will continue this, as a brand, as an organization. I can assure you this is the 5th year. Will we stop it? Answer is no. We will continue this effort. Another is we want to be participative. We don't want it to be a monologue. कि हमने communication कर दिया कि awareness बढ़ाओ. Yes, that is also required. But as we mentioned that as a brand, we want to make a meaningful difference. Hamara brand purpose is all about liberating individuals so that they can fulfill their dream. So this thought process is basically to liberate the women from that thought process कि अगर मुझे cancer हो गया तो मुझे emotionally और financially problem होगा. तो वहाँ पे as a brand we want to become a part of their life and actually take them out of that fear. So that's the whole thought process. Thanks. So, if I can just say something, Neeta, as a healthcare provider, I can tell you we do our bit, but we require our thrivers to come forward and talk. Because only when they tell you their story, only when you see their success, do you understand they go through so much during treatment. It really takes a toll. I mean, I see this every single day. We empathize with them, but what they go through, only they know. And the strength that a woman shows you by standing there and talking about the journey she's been through is what's going to help our country. Thank you so much, Mahima. And I just want to say, like you mentioned caregiver, जब मेरा ये डिटेक्ट हुआ तब मेरी मम्मी बहुत डिफ़िकल्ट स्टेट में थी. वो काफ़ी सालों से पार्किंसन से स्ट्रगल कर रही थी. तो लॉकडाउन में हमारे घर में आईसीयू था, नर्सेस थी, आईसीयू नर्सेस थी. हम चाह रहे थे कि उनको किसी टाइप का इन्फेक्शन नहीं हो, कि बहुत
कमज़ोर हो गई थी कि उनको हॉस्पिटल जाना पड़े, तो मैं उनकी केयरगिवर थी एंड मेरे को हो गया। तो 1 महीने पहले मेरे डैड जो 80 इयर्स ओल्ड हैं, उनको हार्ट में थोड़ा सा फ्लक्चुएशंस ऐसा आया, वैसे वो बहुत फिट हैं और वो हॉस्पिटल से लौटे ही थे। एंड मैंने जब अपना चेकअप कराया तो मैं एक बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन में थी घर पे, और मेरी बच्ची बहुत छोटी है। तो उस टाइम पे मैंने ये कैंसर उन्हें बिना बताए, मेरी नर्सेस को पता था, बाकी दोस्तों को पता था, बट घर में उनको बिना बताए मैंने अपना ये कैंसर ट्रीटमेंट किया, जो बहुत डिफ़िकल्ट हुआ। तो और आप मेरे इंस्टाग्राम पे अगर जाते तो आपको कुछ नहीं नज़र आता कि इसको कुछ प्रॉब्लम भी है लाइफ में, क्योंकि मैंने अपना जॉब कंटिन्यू रखा, जो भी इंडोर्समेंट्स थे, एड्स शूट किए विग लगा के। तो बहुत लोगों को मैं ये समझाना चाहती हूँ कि आप इस उसमें मत रहिए कि बाकी लोगों की लाइफ तो बहुत इजी है, एवरीबडी इज़ गोइंग थ्रू अ गुड टाइम, व्हाई इज़ दिस हैपन टू मी, मेरे साथ तो इतना पहाड़ टूट रहा है। तो सबके ऊपर टूट रहा है, बट सोशल मीडिया इज़ अ प्लेस जहाँ पे अपनी आप अच्छी छवि दिखाते हो, यू नो। तो जस्ट रिमेंबर दैट, कभी भी आप किसी भी स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, आप ये मत सोचिए कि दूसरे लोग नहीं गुजर रहे, सब गुजर रहे हैं, सब हिम्मत से गुजर रहे हैं, सब कोशिश कर रहे हैं। Thank you so much, everyone. I think this was so insightful, informative, and interesting session. That was really fabulous, and I'm glad that looking at your curiosity levels, you want to know more. And of course, we have the solution here for you. One of the easiest solution, we have Hug of Life for you. So do think about that. And of course, now it's time to appreciate and felicitate all our dignitaries, all our esteemed guests.